Welcome back to the channel. If you have been confused between permutation and commutation or wondered how they work together, this video is for you. Today we are going to break down both concepts, explain their differences and show how they combine in a powerful formula. Basically, we prove that from permutation formula बेसिकली परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का एक रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन आज हम प्रूव करने वाले हैं। थ्योरम क्या है? ये जो nPr है दैट इक्वल टू nCr इंटू आर फैक्टोरियल। P बेसिकली यूज फॉर परमुटेशन एंड C बेसिकली डिफाइंड फॉर कम्बिनेशन, राइट। अब इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, बट थोड़ा सा उस पर पहले लिख देते हैं कि n क्या है, ठीक ना। n है टोटल आइटम्स एंड R क्या है? आइटम्स टू अरेंज, ओके। एंड दिस डिफाइन एज फैक्टोरियल, ओके। सो बेसिकली you know that nPr equals to n factorial by n minus r factorial, right? Okay, we will use this formula for proving this theorem, okay. So before we prove the formula for the theorem, let's understand the permutation and commutation meaning, okay. The permutation, it is the number of ways. What permutation is, so the number of ways to arrange r items from n where order matter. This is called permutation, that is basically nPr. And combination is the number of ways to choose r item from n where the order does not matter. Same but different is order matter or order matter. This defines nCr, okay. So right now we are prove step by step. The first step is, we know from the permutation formula is that this is, we write is 1, okay. Step 2 is write the formula of combination, that is basically nCr equals to what? N factorial by r factorial into n minus r factorial. This is nCr, right. This is number 2, okay. Of multiply 2 with r factorial, then what happened? The happened between is r factorial into nCr equals to n factorial by r factorial into n minus r factorial into r factorial, okay. So basically this left side what happened? nCr into r factorial. अब यहाँ मतलब राइट साइड क्या हुआ? r फैक्टोरियल अप एंड डाउन से कट गया, तो क्या हुआ? ये चला गया, फिर क्या रहेगा? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। सो if you see the theorem which we have proved, that is basically nPr, right. So theorem तो easy था, basically the previous theorem you know how to prove, that's why this is easy, but we are showing with an example of this formula, okay. चलो let's, ये तो प्रूफ हो गया, अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं क्या इस फॉर्मूला काम आता है कि नहीं, right. So the example is, let's suppose we have 4 students like A, B and C and D. We want to select and arrange 2 of them. Basically 4 student है, 2 student को लेके हमें arrangement करनी है. So how many ways to choose 2 student from 4? That's basically the example, okay. So for the combination, the formula is what? 4C2, right. अब बताओ 4C2 का मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। आपको NCR का फॉर्मूला पता है,
जाके बैठा दो. That's what happened. That is basically 4 factorial is 24 and 2 or 2 का factorial 2 into 2, that is basically 6. Okay, and that is the combination. अब arrangement क्या होगा? Arrangement basically r factorial, right? So वो क्या होगा? r कितना है इस फॉर्मूला में? r कैसे आपको पता चलेगा कि r कितना है? That is basically 2 factorial, that is 2. So आपको nCr पता है, r फैक्टोरियल पता है. तो वो फार्मूला क्या था? फार्मूला में आते हैं. फार्मूला ये था nCr इंटू आर फैक्टोरियल, दैट इज nPr. अब ये प्रूव होता है कि नहीं, देख ले. तो nCr इंटू आर फैक्टोरियल पता है, तो मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 12. अब ये हम लोग का LHS प्रूफ, LHS का वैल्यू निकला 12, राइट. अब RHS का वैल्यू हमें निकलना है. फिर nPr का फार्मूला क्या है? सो बेसिकली बता दो उस पर. n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज बेसिकली 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो व्हाट हैपेंड? 24 by 4 minus 2 factorial, that is 2, that is 12. So this is the RHS, that is RHS. So जो फॉर्मूला थ्योरम में आपको प्रूव किया, वो एग्जाम्पल के साथ भी अगर देखोगे तो LHS RHS आर सेम. And that's it. We have proved the beautiful connection between permutation and combination and made it easy to understand. If this video is helpful to you, give it a thumbs up, subscribe to the channel and hit the bell icon for more math made simple. Okay, drop a comment if you want to solve real life problems using theorem or explanation more math concepts. Thank you. तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना.